Good morning, students, and I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying a story about a tale of two oxen. What is the tale? देखिए, we have studied two tales. Like एक होता है TALE means story और एक होती है TAIL means किसी भी animal की, right? So both are basically what they are homophones. आवाज में उनकी जो pronunciation है it's totally same but the spelling is different, right? So let's just begin with this tale of two oxen, right? So the title of our chapter is The Tale of Two Oxen, right? About this chapter, okay, all the animals they deserve respect. See, whether it's an animal, whether it's the human being, whether it's anybody who is working at your places, anybody whom you are going to work at some places, any sibling, anybody, all requires respect, right? So treating your pet with kindness is a great way to show that how you care for it. कि अगर आप अपने पेट्स को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो यू विल डेफिनेटली शो दैट हाउ मच यू केयर अबाउट देम, हाउ मच यू आर अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम. सो वी मस्ट ट्रीट देम विद डिग्निटी, मीन्स रिस्पेक्ट के साथ, एंड प्रोवाइड देम विद अ लॉट ऑफ केयर, की बहुत सारी केयर हो. एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी ऑफ टू ऑक्सन, अ टेल ऑफ टू ऑक्सन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेमचंद की स्टोरीज है, राइट? So let's just read this. This was a tale of two oxen. In एक चीज और कि जो काउ होता है, काउ का ही ऑक्सन होता है. आई थिंक दिस काउ का ऑक्स का ऑक्सन, वी हैव स्टडीड दैट ऑक्स का ऑक्सन काउ का बुल होता है, right? That we have studied in genders. Now this emotional and heartwarming tale of two oxen, देखिए this is very emotional, means it's very heart touching, and heartwarming means हमारे दिल को छू जाने वाली. ये जो टेल है टू ऑक्सन्स की, who are best friends, जो कैसी हैं, they are best friends and who go through much through sufferings and hardships. इन लोगों ने बहुत सारे sufferings और hardship को face किया है, and they show some compassionate, and the author was, and how he's aware of full of these feelings and sensibilities of animals, ki how animals they also show emotions. As most of the people from your at your places, they have might have pet dogs at your places, and they used to love their dogs a lot, because dogs, any animal, they are much more sensitive. वो लोग बोलते नहीं हैं but उन लोगों को भी फील होता है, right? Now जूरी had two handsome sturdy oxen. देखिए जूरी कोई भी एक पर्सन है जिनके पास दो ऑक्सन है, राइट? Sturdy means हट्टे कट्टे, right? जिनका नाम है हीरा एंड मोती, right? And having been together for long, कि they have been residing together along, they have become friends. वो क्या बन चुके हैं? Friends बन चुके हैं. Sitting faces to face, they converse in a mute language. They used to do a conversation between them in a mute language, means इशारों में. And we are not sure that how they understood each other. We are not even sure कि वो चीजों को कैसे समझते हैं. Both express their love for each other by just licking and smiling. Because animals, they cannot speak, they show love by licking and smelling. ये उनके gestures हैं जिनसे वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं. Sometimes they just lock their horns, कभी कभी अपने horns को lock कर लेते हैं. Not out of hostility. What do you mean by hostility? Means enemy. Enemy बोले तो दुश्मनी से नहीं, but for fun, like the two friends they engage in a friendly combat. Friendly combat means आपस में दोस्तियों की छोटी नोटी छोटी चीजें नोक झोंक चलती रहती है. फ्रेंडली कॉम्बैट मीन्स एक झगड़ा जिसमें बहुत ज्यादा प्यार हो, मस्ती वाला प्यार, राइट? एंड वेन एवर दे वर योग टू दी प्लो, मतलब उनको प्लो करने के लिए लेकर जाते हैं, और अ कार्ड दे मूव शेकिंग देयर नेक्स एज इफ ईच वर ट्राइंग टू, मतलब वो दोनों अपनी गर्दन घुमाती हैं, and they take the maximum weight on his own neck, कि they are trying to take the maximum weight, कि maximum weight ले लें, मतलब अपनी गर्दनों को ऐसे just rotate कि दोनों के दोनों अपने end से ज्यादा maximum weight carry कर पाए. Now and when after the day work, जब सब कुछ हो जाता है, they are unyoked, they relieve their weariness. What do you mean by weariness? Means tiredness. This means tired. Weary means tired, right? By doing what? By licking each other, एक दूसरे को lick करके they usually relieve their, means just get relaxed because of their tiredness. And when their fodder was put into the manger, देखिए fodder means उनका खाना, जो चारा होता है जब वो उनके कंपार्टमेंट में रखा जाता है, they just stood up, एक साथ खाती हैं, they eat together, and when one stopped, अगर एक रुकता है तो दूसरा भी रुक जाता है. Now one day Julie sent the pair to
his in-laws, उनके in-laws के पास भेजा. How could the oxen know that they had been sent away? कि मतलब उनको कैसे पता चलेगा कि उनको हमने वहां भेज दिया है? They thought that they had been sold, और उनको क्या लगेगा? That they have been sold by their master. Now Jury brother-in-law sweated between his teeth and driving them towards home. कि मतलब sweated means उनको पसीना आ रहा था while he was carrying both the oxen to this place. देखिए ब्रदर इन लॉज, कभी भी ग्रामर में ब्रदर के साथ एस नहीं आता है. अगर आपने यहाँ एस लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा. नेवर पुट एस ओवर हियर. ब्रदर इन लॉज नहीं होता है, ब्रदर इन लॉ होता है. राइट नाउ इफ ही गोडेड देम फ्रॉम बिहाइंड, अगर वो पीछे से भाग गए, द टू विल रन राइट एंड लेफ्ट, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? राइट और लेफ्ट भाग जाएंगे. पुल देम फॉरवर्ड बाय देयर नोज स्ट्रेप्स, अगर हमने उनको नोज से पकड़ के इधर लाए, दे विल पुल बैकवर्ड, वो अपने आप को पीछे पुल करेंगे. राइट एंड इफ यू विप्ड देम एंड दे जस्ट लो देयर हॉर्न्स, विप देम का मतलब क्या होता है? उनको ऐसे पकड़ लेना जकड़ के. देन व्हाट दे विल बी डूइंग? दे विल लोअर देयर हॉर्न्स एंड बिलोड, मतलब वो नीचे हो जाएंगे और अपने हॉर्न्स के साथ हमको मारने की कोशिश करेंगे. नाउ इफ गॉड हैज गिवन देम स्पीच दे वुड हैव आस्क्ड कि जूरी, अगर गॉड ने उनको क्या बोला होता, बोलने की शक्ति दी होती, तो दे मस्ट हैव क्वेश्चन जूरी दैट वेयर यू हैव बीन टेकिंग टू अस, व्हाई आर बीइंग ड्राइवन आउट, कि हमें बाहर क्यों ले जाया जा रहा है. वी हैव सर्व्ड यू विद डिवोशन, वी हैव गिवन यू सो मच लव एंड अफेक्शन. राइट एंड इफ यू हैव टोल्ड अस दैट वी आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, वी कुड हैव वर्कड हार्डर, कि हम लोग और हार्ड काम करेंगे. वी आर विलिंग टू डाई, हम लोग मर जाएंगे अपने सर्विंग, अपने मालिक के लिए. सर्विंग यू, वी नेवर कंप्लेन अबाउट what you feed us, we never said ki what you are feeding with us, and still you will sold to us to the cruel man. Cruel means one who is very unkind. As you can see, these both the oxen. Right now by the evening the pair reached their destination. अब शाम के समय पे वो ब्रदर इन लॉ की जगह पहुंच गए. they had been very hungry, बहुत भूख लग रही है, since morning, that they did not lower their mouths into the manager, की मतलब उन्होंने अपना मुंह उस कंपार्टमेंट में नहीं डाला है जहाँ पे उनका फोल्डर आता है. they were totally broken hearted, उनका दिल टूट चुका है. that they have left their home, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया. and they have been come to new place, new village with those new people, and they are looking too strange, और उनको क्या लग रहा है? बहुत ही ज्यादा strange लग रहा है. now both confident in the animal language, दोनों की दोनों animals language में बातें कर रही हैं. they are just looking at each other with slanting eyes, means अपनी eyes उनकी नीचे है. and lay down. when the village had gone to sleep, they broke their teeth. दे ब्रोक देयर टीचर मीन्स आवाजें निकाल रही हैं, एंड मेड देयर वे बैक होम, की वो अपना रास्ता ढूंढ रही हैं, दैट हाउ दे बोथ कैन गो बैक एट देयर प्लेसेस. नाउ रोप्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रस्सियां बहुत ताकत से भरी हुई हैं. द टू हैड समन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? समन मीन्स टू कॉल. वेरी वेरी very important word, this summon, opportunity, dwell, habitat, escape, all these words they usually they have seen in unseen passages. Fetch, ये वो words हैं जो बार बार repeat हो. so much strength that the ropes broke with one jerk. what do you mean by jerk? इतनी ताकत लगाई कि एक झटके से. jerks means बस में लगते हैं jerks. जब आप पीछे सीट पे बैठ जाते हैं, you usually used to have face jerks on the buses, inside the buses. this jerk means झटके लगना. right now when Jury just woke up in the morning, he found and the oxen standing at the manger, they with the broken pieces of tether hanging around their neck. उनके नेक पे वो टूटी हुई रस्सी लटकी हुई है, जब उसने सुबह में देखा. और उनकी लेग्स अप टू द नीज वर सोल्ड, और उनकी जो लेग्स हैं नीज तक मिट्टी से भरी पड़ी हैं with mud, and both of them they look at Jury with affectionate defiance, कि प्लीज हमें कहीं और मत भेजिए, हमें बहुत प्यार है आपसे. right now Jury heart was filled with totally love and affection. he ran towards them and embraced them. embrace means गले लगा लेना, चीजों को accept कर लेना. now the boys of the family and the village they come and stood around them clapping their hands. Everybody was so appreciating welcome. the villager boy decided कि हम दोनों animals को हीरो की तरह डिनोट करेंगे. एंड वन बॉट रोटीज, कुछ लोग रोटीज लेकर आए. अदर वन गुड़, अनदर वन इज केक, और कुछ ना कुछ सब लोग खाने के लिए लेकर आए. नाउ one boy said these oxens are totally unique, they are outstanding. right another agreed, yes, they returned from
सो फार अनएडेड. व्हाट डू यू मीन बाय एडेड? देखिए एड का मतलब क्या होता है, किसी को हेल्प करना, टू हेल्प समवन. एंड ओवर हियर दिस अनएडेड मीन्स विदाउट हेल्प. बिना किसी की मदद के वो अपने मालिक की जगह वापस पहुंच गई. नाउ अ थर्ड सेड दे आर नॉट ऑक्सिन. ये ऑक्सिन नहीं है, दे आर एग्जैक्टली द ह्यूमन बींग्स. द प्रीवियस लाइफ दे माइट बी द ह्यूमन बींग्स. हाउएवर when Judy wife saw them at the door, she became red with anger. उनको बहुत गुस्सा आया. They are so ungrateful, did not work there for a day and bolted. She is saying that they are too ungrateful that they didn't even take care of my oxen for at least a day. Bolted means उनको बहुत गुस्सा आया. जूरी कुड नॉट स्टैंड हिज एक्यूजिशन. जूरी उनके बोलने पे, मतलब वो एक्यूज कर रही थी, इल्जाम लगा रही थी. शी वाज ही डिडंट स्टैंड. व्हाई दे आर अनग्रेटफुल? वो अनग्रेटफुल नहीं है. दे आर नॉट फीड प्रॉपर्ली. had they have feed properly, they wouldn't have run back. He's saying if they have given the food to them in a proper manner, they would not have run from that place. Now, the wife said they run back because people don't foolishly pamper their animals like you. कि वो कह रही है कि वो वापस आ गए क्योंकि people are not foolish. वो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो animals को all the time human beings की तरह प्यार करें. These two shriekers they came back. इनकी ही गलती है कि ये वापस आ चुकी हैं. They won't get any more seed cake, wheat, and I will feed them only dry fodder. मैं सिर्फ इन्हें सूखा चारा खिलाऊंगी. सबकी इनकी लोगों की गलती है that they have come. ये अपनी गलतियों की वजह से वापस आ गए हैं और इनको क्या चाहिए? इनको कोई चीज नहीं मिलेगी. ये केक एंड ये सब जितना भी कुछ आया ये सब नहीं मिलेगा. Now, she instructed the attendant to feed the oxen only dry ऑर्डर की, सिर्फ उन्हें सूखा चारा खिलाए. उसने इंस्ट्रक्टर को इंस्ट्रक्ट कर दिया. नाउ द ऑक्सन फाउंड द फीड इन द मैनेजर टू बी टेस्टलेस. कोई भी ऑयल नहीं है, कोई भी सीड केक नहीं है. दे लुक्ड एट द डोर विद द एक्सपेक्टेंट आईज. मींस दे वर जस्ट लॉन्गिंग कि उनको अच्छा खाना मिले. नाउ जूरी सेड टू द अटेंडेंट व्हाई डोंट यू ऐड सम सीड केक? सीड केक क्यों नहीं ऐड किया? मालकिन would kill me, said the attendant. She will just kill me if I'll put all these things. The next day, Jury brother-in-law Gaya took the oxen once again, this time yoking them to a cart. Means cart के ऊपर लगा के, bullock cart के आगे लगा के उनको लेके जा रहा है. Now once or twice, Moti she tried to drive the cart into a ditch, but Hira, who was forbearing, pulled back. Once एक बारी क्या हो रहा था कि जो मोती है, she is trying to drive into a ditch. कि ditch means उनको धोखा दे, but she is like Hira is like forbearing, उस चीज को tolerate कर रही थी. हाँ. When Gaya reached home, he tethered them with a thick rope. वापस से उसको रोप के साथ बांध दिया. Thrashed them for previous day escape and fed them only dry fodder. कि मतलब उसको डांटा कि आप क्यों भाग गई और उनको वापस से सूखा चारा खिलाया. Now, do you what do you mean by this word? Both, that is Hira plus Moti, and never been insulted like this. इससे पहले उन दोनों की कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी. They have never been thrashed and the dry fodder added insult to the injury. और इससे क्या हो गई उनको injury. Now, next day Gaya yoked them to the plow but they refused to move even to one step. अब उसको लेकर जा रहे हैं प्लोइंग के लिए, मतलब उसको ग्रेजिंग कराने के लिए फील्ड पे, और उनमें से कोई भी एक ऐसी है जो नहीं जाना चाह रही थी. नाउ गया thrashed them until it was tired. मतलब उसको इतना खींचा कि जब तक वो थक नहीं गई. गया repeatedly hit Hira's muzzle. Hira's muzzle means उसको पीछे से मारा, हिट किया, and Moti became furious. उसको बहुत डर लगने लगा. And he broke the loose and just ran away with the plow. और वो वापस से प्लो की तरफ वहां से भी भाग गई. Now, Hira said in their animal language, no use running. भागने की कोई जरूरत नहीं है. Moti said he will nearly kill you. You will get a hard beating. ये तुम्हें बहुत मारेगा and he will definitely kill you out. So what? Born an ox. How can we escape thrashing? कि हम thrashing से कैसे भाग? thrashing का मतलब होता है चीजों की जो पीछे कटिंग रहती है, आप एनिमल्स को आगे लेके जाते हैं और नीचे से अपने जो मड होती है उसके अंदर से चीजों को ऐसे बाहर निकालते हैं. एस्केप वर्ड दोबारा आ चुका है, मीन्स टू रन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस एस्केप वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. Gaya was hurrying towards both of with them, with two men carrying the लाठीज. की लाठीज पीछे और वो दोनों के पीछे भाग रहे हैं लाठीज. Right? लाठी we all know it's a wooden stick. Moti said, should I give him the taste of his own medicine? He is coming here with लाठीज. क्या मैं इसको ही इसका मजा चटा दूं, इसे दवाई दिला दूं? ये दोनों के दोनों यहाँ पे लाठी आ रहे हैं. No brother, just stop now. Please रुक जाओ.
इफ ही thrashes me I shall bring them down, अगर इसने मेरे को ऐसा किया मैं इसको नीचे लेकर आऊंगी. नो, दिस इज अगेंस्ट आवर धर्म, ये हमारे धर्म के, हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है. मोती वॉज फोर्स टू रिस्ट्रेन हिमसेल्फ. रिस्ट्रेन मीन्स कीप हिमसेल्फ बैक, अपने आप को एकदम रोकना. गया कम हियर एंड कॉट बोथ ऑफ देम, और दोनों को पकड़ लिया. एंड ड्रोव देम बैक, वापस लेके चला गया. दिस टाइम ही डिड नॉट रिजॉर्ट टू मी, टाइम पे वो उसको मार नहीं रहा था. ऑब्जर्विंग हिज मूड, गया एंड हिज कंपेनियंस थॉट इट वाज वाइजर टू बी डिस्क्रीट. ऐसा करना बिल्कुल भी क्या है, वाइज है कि इट इज वाइजर टू बी डिस्क्रीट मीन्स ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट. वंस अगेन द टू वर सर्व्ड, फिर से ड्राई ऑर्डर दिया. बोथ स्टूड स्टैंड स्टिल, वहीं पे रुकी रही. द फैमिली वाज हैविंग देयर इवनिंग, फैमिली अपना खाना खा रही थी. सडनली अ स्मॉल गेम, शी कम आउट विद रोटीज एंड पुश्ड देम इनटू हिज माउथ, उनके मुंह में वो रोटियां डाल दी. नाउ this did not alleviate their hunger, yet their hearts seemed satiated. Satiated means their heart feels much satisfied, and elevate means उनकी भूख तो नहीं मिटी but still उनको satisfaction हुआ. Here was a kind-hearted person. They are saying that there comes a kind-hearted person. The girl was Gaya's daughter, and her mother was dead, and the stepmother ill-treated her. Her mother has already died, and she is ill-treated by her stepmother. Now both are yoked the whole day, beaten but defiant. कि दोनों के दोनों पिटते हैं, वो मारते हैं अपनी बेटी को. And in the evening there were set her to a stake, means वो वापस से उसी चीज में टिकी हुए हैं. Still the same still girl, and मतलब the girl, she is again come in the evening. She's just feeding both the oxen with rotis, and as a result of this token of affection, the two, in spite of the dry fodder they were fed, did not lose their strength. कि उनको उनकी रोटी दे दी, ड्राई फोल्डर के बाद भी वो अपने स्ट्रेंथ को नहीं लूज कर पाई. बट देयर आईज एंड देयर हार्ट्स वर फिल्ड विद रिवोल्ट, उनको बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत गुस्सा आया. वन डे मोती said, हीरा, वी कांट गो ऑन लाइक दिस, हम ऐसे नहीं रह सकते. व्हाट डू यू वांट, कि तुम्हें क्या चाहिए. आई टॉस वन ऑफ देम अपॉन माय हॉर्न्स, कि मैं इनमें से किसी एक को अपने सींग से मार दूंगी. बट दैट स्वीट गर्ल हु फीड अस रोटी इन द मालिक's डॉटर, मालिक की डॉटर हमें रोज रोटी खिलाती है. शी वुड बी ऑफन, वो क्या हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी. दैट टेक टॉस अप द मालकिन, इट इज शी हु बीट्स द गर्ल, वो मालकिन ही है जो उस बच्ची को रोज मारती है. तो बट इट इज अगेंस्ट टू यूज वायलेंस, कि हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए वुमेन के अगेंस्ट. बट डोंट यू शो द वे आउट, शुड वी ब्रेक द लूज, कि अगर हमारा टेम्परामेंट लूज हो गया. बट यस, बट वी शैल कट दिस थिक रोप, हमें इस रोप को तो काटना ही होगा. लेट्स च्यू द रोप फर्स्ट, इसको हम काट लेते हैं. देन वी विल स्नैप वन जर्क, एक झटका देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे. एट नाइट व्हेन द गर्ल हैड फीड देम, दे बिगन टू च्यू द रोप्स, उन्होंने रोप्स को च्यूई करना स्टार्ट किया. बट द रोप्स वर टू थिक टू कट थ्रू, कि वो नहीं कट हो पा रही. नाउ सडनली द डोर ओपन एंड द लिटिल गर्ल, शी जस्ट केम आउट, वो बाहर आई. She patted their faces and said, उसने उनके फेसेस को देखा and she said, I will untie you, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगी. Just run away from here, these people will kill you and they are planning to put a halter through your noses. Halter means आपके नाक में एक काइंड ऑफ ना रोप डाल देंगे कि आप बिल्कुल नहीं हिल सकते हैं, आप प्लीज भाग जाइए. She untethered them, but the two oxen फिर भी वो रुके रहे. Now मोती asked, why don't you move, अब तुम क्यों नहीं चलते हो. Kira said, if we will run, everyone will scold the girl. अगर हम भागे तो everyone will scold the girl. And suddenly the girl, she began to shout, oh Dada, both the oxen are running away, just come quickly. कह रहे both the oxen भाग रही हैं, just जल्दी आओ now. Gaya came out in a panic, then the two oxen run and chased by Gaya. अब दो oxen भाग गई हैं और गया उसको क्या कर रहा है, chase, उसका पीछा कर रहा है. Now when the Gaya they returned to get some more villages to help, the pair got a head start. मीन्स उनको क्या हो गया कि वो भागने का और बढ़ावा मिल गया. द टू मैन दे रैन स्ट्रेट विदाउट नोइंग कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ चली गई है. सून दे लॉस्ट देयर वे, उन्होंने अपना रास्ता खो दिया. एंड दे फाउंड देमसेल्व्स अराउंड स्ट्रेंज विलेजेस, और दोनों ने कहा पता नहीं कहीं सी स्ट्रेंज विलेज में चली गई हैं. बोथ ऑफ देम दे स्टूड एट द एज ऑफ अ फील्ड वॉन्डरिंग, अब हम क्या करें एक किनारे पे आके. हीरा सेड, लुक्स वी हैव लॉस्ट आवर वे, हमने अपना रास्ता खो दिया है. You ran like a mad ox and you should not have fought him down, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पागलों की तरह तुम भाग लिए वहां से.
if we have done that, the people would have blamed us. अगर हम यहाँ ऐसे कर, अगर हमने ये किया होता तो लोग हमें ब्लेम करते. बट बोथ वर टेरेबली हंग्री, दोनों की दोनों बहुत हंग्री, एंड दे सॉ द पीस ग्रोइंग इन द फील्ड, एंड उन्होंने देखा मटर उग रहे हैं. दिस बिगन टू राइट. वेरी आउट ऑफ डेंजर. वेरी मीन्स वॉर्न होना, कॉशियस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. Right. And when they had their fill, they felt that they were free and began to frolic around. कि इधर उधर घूम सकते हैं. First they pledged and then joined with the horns and began to push one another. पहले वो लोग साथ में हुए, फिर उन्होंने साथ में क्या किया, ये हॉर्न्स के साथ एक दूसरे को पुश करने लगे, and they were together. And suddenly they saw huge and a terrible bull bellowing and advancing towards them. और उनकी तरफ क्या आ रहा है, एक बुल आ रहा है. And fighting with him like inviting death. Not fighting could be equally hazardous. अगर आपस में ऐसे लड़ाई हो रही थी कि जैसे एक की मौत होने वाली है, एंड बट नॉट फाइटिंग कुड बी, अगर लड़ाई नहीं करी तो इट कैन बी डिजास्ट्रस, इट कैन बी hazardous, राइट. नाउ मोती said we are in a great danger, think of a way out, कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालो. Hira replied he won't listen to our entreaties, वो हमारी बात को नहीं सुनेंगी. The only way, शुड वी रन अवे, दैट वुड बी कावर्डाइज, अगर हम भाग गए तो क्या हो जाएगा, डरपोक माने जाएंगे. कावर्ड मीन्स डरपोक बोले जाएंगे. द ओनली वे फॉर अस टू इज अटैक हिम टुगेदर, दोनों एक साथ अटैक करते हैं. वी फ्रॉम द फ्रंट एंड यू फ्रॉम द रियर, फ्रॉम द बैक. ही वॉन्ट बी एबल टू स्टैंड दिस टू प्रोलॉन्ग्ड अटैक, कि दो अटैक एक साथ आ रहे हैं, शी वॉन्ट बी एबल टू स्टैंड. इट इज डेंजरस बट इट इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे that we can came out of fear. Both the friends they attacked and putting their lives at risk. अपने खुद को risk पे लाए. The bull had no experience of fighting against the two animals together. The bull, he was totally unexperienced at how to fight with two oxen. And as he ran towards this, Moti attacked him from the Moti attacked from the prayer. From rear means पीछे से. And when the bull just turned towards Moti, और जब bull मोती की तरफ आया, हीरा अटैक्ड हिम फ्रॉम द अदर साइड, हीरा ने दूसरी साइड से उसको अटैक किया. नाउ द टू फ्रेंड्स दे फॉट क्लेवरली एंड जस्ट wounded द बुल, और वो बुल को चोट लग गई. एंड दिस टू फ्रेंड्स दे जस्ट फॉट क्लेवरली, बहुत ही चालाकी से दे स्टार्ट फाइटिंग एंड चेज्ड हिम. एंड द पुअर फेलो, वो बुल जो है वो नीचे गिर गई, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, तो ब्रेथ भी, सांस भी नहीं आती. एंड टू लेट हिम गो, कि जाओ भाई जाने दिए. नाउ both the friends they walk along relishing their victory, उनको अपनी अपनी विक्ट्री पे बहुत ज्यादा जश्न बना रहे थे. Hira said this thing, how to reach home now what is the way to reach your home, let's first eat something. मोती ने बोला चलो कुछ पहले खाते हैं. Now the pea crop was right there, पी का मतलब मटर का पेड़ लगा हुआ था. मोती एंटर्ड द फील्ड अगेंस्ट, मोती अंदर आया. हीरा ने एडवाइस किया. दे जस्ट हैड began to eat when the two men carrying लाठी in close to them. जैसे ही खाने लगे, दो बंदे आने लगे लाठी के. Now हीरा was just on the edge, हीरा एकदम किनारे पे था. And escape, again word came, escape means भाग गया. मोती could not run because his feet was caught in the soft and recently watered soil, मतलब उसका पैर मतलब ऐसे गीली मिट्टी में फंस गया. Now he was caught, और उसको पकड़ लिया गया. Hira saw his companion was in trouble, वो वापस आ गया. When Hira saw मोती प्रॉब्लम में, he just returned back and he could not desert his friend, he was too caught, और उसको भी नहीं बचा पाया और दोनों को पकड़ लिया. Now मॉर्निंग में both the friends they were locked up in the municipal yard, दोनों के दोनों क्या है, municipal yard में उनको क्या कर लिया, लॉक कर लिया. टू stray cattle and the कांजी हॉर्स, मतलब उसको क्या है वहां पे उन्होंने पकड़ लिया. Now this was the first time ever the two friends did not get anything to eat for the whole day. पूरा दिन में उनको कुछ नहीं मिला खाने. They could not figure out the character of their own new owner, कि उनका कैसा ओनर है. They were not able to decide कि ये कैसे हैं. There were buffaloes, वहाँ पे buffaloes थी, sheep, goat, horses, donkeys, but no one was feed. All were lying half dead. सब लोग अधमरे थे, किसी को कोई फीड नहीं कराया जा रहा. A few had become so weak that they are able to stand on their feet. खुद के पैरों पे बहुत ही मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे. The two friends stared at the gate the whole day, but no one trace of the border. वो गेट की तरफ देख रहे हैं, बट उनके लिए कोई भी खाना नहीं लेकर आया. And they licked the salty mud on the walls. Salty mud को वो क्या कर रहे हैं, लिक कर रहे हैं. And but this could not allay their hunger. Allay means calm. Very important word.
calm. If you will open your dictionary one day, then you will definitely see in your A words, LA is the first word. LA means calm, right? Now, finally, Hira said rebelliously to Moti. Rebelliously means बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय से बोला, मोती, I can't stand it anymore. मैं यहाँ खड़े नहीं हो सकता. मोती said dejectedly. It looked like कि हम मरने वाले हैं. Dejectedly means with condition of no hope. डोंट लूज होप, थिंक ऑफ अ वे कि हम यहाँ से कैसे भाग सके. जस्ट कम एंड लेट्स ब्रिंग डाउन दी वॉल. एक साथ आ जाओ, इस वॉल को मार मार के हम नीचे ले आएंगे. एंड आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग नाउ. अब मैं कुछ नहीं कर सकता. नाउ हीरा रैमर्ड हिज हॉर्न्स इनटू द मड वॉल ऑफ द म्युनिसिपल यार्ड. उस पे सींग मार लिए अपने, को पुश किया. एंड अ पीस ऑफ मड, एक मड का मतलब एक टुकड़ा गिर गया. एंड दिस इनकरेज्ड हिम अगेन. वापस से उसने अपने हॉर्न्स को उस वॉल पे अगेन एंड अगेन किया. एंड दिस टाइम सारी मड वॉल से बाहर आ गई. नाउ when the चौकीदार appeared to count the animals, he observed कि हीरा का बहुत ही ज्यादा wild behavior हो रहा है. He thrashed him with लाठी and again उसको रस्सी से बांध दिया. So Moti said, so you got beaten up after all? What did you get? क्या मिला तुमको ये करके? वापस से तुमको मार खाई है. I applied all my strength. मैंने सारी अपनी ताकत लगाई. सब useless है. Now you are bound. अब तुम्हें बांध दिया गया. I'll keep it doing in spite of all the ropes. ropes के बाद भी मैं करूंगा. देखिए in spite के साथ off आया हुआ है, despite के साथ off नहीं आता है. You will lose your life. He's saying तुम अपनी life lose कर लोगे. Who cares? कौन चिंता करता है? We are going to die anyway. वैसे भी हमने मरना ही है क्योंकि हमें खाना खाने के लिए तो they are not giving us. The wall had become down. So many lives would have been saved. अगर wall नीचे आ चुकी होती, बहुत सारी जानें बच जाती. So many are locked up here, almost lifeless. बिना की लाइफ के. If this continues for some more days, कुछ ऐसा रहा तो we all will die. This is true, all right. I will join you. They saying कि मैं भी join करूँगा. Now Moti also thrust his horns. Then Moti started doing the same work. A chunk of mud वापस से वही होने लगा. And encouraged, he began to dig the horns into the wall with his all his strength. अपनी strength से वापस से दीवार तोड़ने की कोशिश. Now it's about 2 hours. 2 hours that half the wall नीचे आ गई. Right. Now as soon as the wall collapsed, wall नीचे पूरी गिर गई. The half dead animals suddenly came alive. सारे के सारे जो animals हैं वो सब जिंदा हो गए. मतलब उनके अंदर जान आ गई. The three mares, they were first to bolt, means उनको झटका आने लगा. Then the goats and then the buffaloes. फिर क्या थे? Goats थे और फिर buffaloes थे. And the donkey, they stayed put. Hira asked, why don't you run away? तुम क्यों नहीं भागते हो? Out of the donkey said, what if we are caught again? अगर हम वापस से पकड़े गए, then so what? Now just choose a chance कि आप क्या कर लें, escape कर लें. Means run. We are afraid we shall keep lying here. हम यहाँ पे अगर डरे रहे तो हम यहीं पे रह जाएंगे. It was past midnight. The donkeys were still undecided. और donkeys ने अभी तक decide नहीं किया. मोती was busy cutting his friend's rope. अपने friend की rope को काट रहा था. When he failed, Hira said, "You go and leave me here." तुम जाओ यहाँ से और मुझे यहीं छोड़ दो. We might meet somewhere कि हम कभी किसी ना टाइम पे मिलेंगे ही. मोती replied tearfully, "Do you think I am so selfish? We have been so together so long. हम लोग इतने सालों से साथ हैं. I cannot leave you when you are in trouble. तुम परेशानी में हो. I cannot leave you." Hira said, "You will get a severe beating. तुम्हें बहुत मार पड़ेगी. They think that you are responsible for this." Moti replied with pride. उन्हें लगता है कि इस सब चीजों की responsible कौन हो? तुम हो. I don't care if I am thrashed for what I have done. मुझे नहीं परवाह कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है. We have at least saved 10 or 9 or 10 life, and हम कम से कम 9-10 एनिमल्स की लाइफ को बचाएंगे और वो क्या करेंगे? हमें ब्लेस कर देंगे. Now saying this, Moti drove the two donkeys with his horn. उन्होंने दो donkeys को भी साथ में ले लिया. Then they came and lay down and come close to the friend. उनके पास आ गए. Now, what a hullabaloo occurred when the munshi, the chokidar and others come there. Moti was given a sound beating and beating with a rope like his friend. मोती को बहुत ज्यादा मारा रोप से और उसके फ्रेंड को भी. और वहां पे हल्ला मच गया जब चौकीदारी आया. Now for one full week the two friends remained bounded in a kanji horse में उसको डाल दिया. Without any straw means कुछ भी डाले बिना. They were however provided water. सिर्फ एक टाइम पे उनको पानी दिया जा रहा था. And they were so, they became so weak,
so lean कि अब उनकी ribs भी चमकने लगे. They struck out, and one afternoon they heard a drum beat in front of Kanji house के पास एक drum beat जैसी आवाज उन्होंने सुनी. And about 50 to 60 people resemble there. और वहां पे कम से कम 50 से 60 लोग थे. The two friends brought out, और दोनों friends को बाहर लेकर आए. People came and looked at them. लोगों ने देखा उनको and turned them uninterested. Who would buy such emaciated cattle? की इतनी थकी हुई tired cattle को कौन buy करेगा? Suddenly a cruel looking beard man arrived. एक बहुत ही ज्यादा cruel man, he just came out, started talking to मुंशी. वो मुंशी से बात करने लगे. While prodding the hunches of Hira and Moti with his finger. वो अपने fingers से उनको क्या कर रहे थे? इशारे कर रहे थे. Both the friends, they were totally terrified. They were totally frightened at the very look of the man. उस look से बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे. They were in a doubt कि who he was and why he is so much interested in them. कि ये कौन है और उनमें क्यों इतना interested है. They just look at each other, frightened eyes, and lower their heads. उन्होंने अपने सर नीचे कर. Hira said, "Why have we run from Gaya? Now we still lose our life." अब फिर से हम अपनी life को lose कर देंगे. Moti said irreverently, "Why doesn't God pity us? भगवान हम हमारी क्यों नहीं सुनता? क्यों नहीं हम पे तरस खाता? Now for God, it's the same whether we live or die." अब ये बिल्कुल सही बात है. अगर हम जिंदा रहे तभी भी हम मरे हुए हैं, और मरे तभी भी जिंदा ही हैं, तभी भी मरे हुए हैं. We'll still he will stay with this man for some time, कुछ टाइम रहेंगे. And if God came to us rescue in shape of that small girl, then हम ऐसा नहीं होगा. अगर भगवान ने हमें उस छोटी बच्ची की जैसा किसी को हेल्प करने के लिए भेजा है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. After being sold, the two friends shivering and went beard man के साथ चले गए. They walked unsteadily, धीरे धीरे चलने लगे. Driven by fear, उनको डर लग रहा था. And the moment they slowed down, they were hit with a stick. और जैसे ही वो स्लो हो रहे हैं, उनको पीछे से स्टिक पड़ गया. And on the way, रास्ते में, they saw a herd of happy cattle grazing in a green field. Green field में cattle, they are grazing in the green field, and the cattle were unmindful that two of their brothers, they were in the clutches of a butcher. कि वो किसके हाथ में है? दोनों के हम दोनों एक साई के हाथ में आ चुके हैं. Suddenly the two friends realized that this was the route Gaya taken to drive them to the village. They remembered that this is the same way, same रास्ता जहाँ पे हमको वो अपने village लेके गया था. सेम फील्ड्स हैं, सेम गार्डन है, सेम विलेजेस हैं, और वो और फास्ट मूव होने लगे. ऑल ऑफ देयर वेयरनेस वाज गॉन. वेयरनेस मींस टायर्डनेस. लो एंड behold, धीरे धीरे, it was their own village. This was the same where they used to drive the water wheel. वो बिल्कुल सेम विलेज में पहुंच गए जहाँ पे उनका था. Now Moti said, "We are close to our home." Meera said, "By God blessing, कि हम अपने घर के पास आने वाले. I'll run home now. मैं अपने घर भाग जाऊंगा. He won't let you. I'll push him down. अगर वो नहीं भी होगा तब भी मैं जानबूझ के पुश करके तुम्हें खींच के वहां पहुंच जाऊंगा. No, no, let's run up to the pen. Both of them they run towards their fold. अपनी तरफ चले गए. Jumping their calves, अपने calves को प्यार करने लगे. Both of them come and stood there, and the beard man also came chasing them. उनके पीछे पीछे आने लगा. Yuri was basking in the sun. Basking means धूप सेक रहा था. The moment he saw the oxen, he ran towards them. उनके पास गया and embraced them one by one. And his eyes were totally filled of joy. बहुत खुश हो गया. And one of them was licking Jury's hand. कि Jury के हाथ को वो lick करने लगे. Now the beard man caught the oxen, and Jury said, यही है वो मेरे oxen. How I bought them in an auction from the Kanji horse. मैं उनको वहां से. So what do you mean by auction? Means नीलामी वाली जगह से लेकर आया हूँ. I think you have stolen them. कि तुमने उसको चोरी कर लिया होगा. Go away. They are my oxen. No one has the right to sell these oxen. किसी को इतना right नहीं है कि वो उनको बेच दे. I'll go and report to the police that what you have done, right? And these are my oxen. They have come to my doors. ये मेरे oxen हैं और ये मेरे घर में रहते हैं. As the beer man tried to forcefully take full the oxen, since the beard man was forcefully taking the oxen with him, Moti advanced towards them. Moti ने वापस से बोला, and lowering his horns, the man drew back. Man वापस गया. Moti chased him, and the man began to run. वापस मोती was just chasing, और man जो है भाग गया. मोती ran after him, उसके पीछे पीछे गया. And once outside the village, the man stopped and started थ्रेटनिंग. उसको थ्रेट करने लगा, धमकी देने लगा, बददुआएं देने लगा, कर्स करने लगा, और उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगा. एंड मोती स्टार्ट फेसिंग हिम, एंड द विलेजर्स दे लाफ्ड जब तक उसका मजाक नहीं बन गया.
When the man went away, Moti returned triumphantly. Triumphantly means उनकी उन्होंने जीत पाई. Now the manager was filled with fodder. उसने अपने fodder को उसमें खाना डाला, seed cake, grains, and both of them वो लोग खाना खाने लगे because they were totally hungry. Jury stood there and patting them, उनको प्यार कर रहा था, encouraging them. The whole village was in the state of excitement. They all were very delighted. Then jury wife came and kissed their faces. कि हमें उनकी उनके faces को kiss किया. The story was quite emotional. It was so heart touching. Teaches us that we should not do. We should always respect the animals also because they are also human beings. Not treat them so cruelly because animals they do not speak but they also feel and they are also emotional like humans. Please do take care of your pets if you have pets at your places. And apart from that, keep studying hard and stay blessed and keep smiling. Thank you.